Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम जयंतो। थैंक यू राजेश। थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks witness modest losses amid mixed global cues. Sensex closes near the 59,600 mark. Nifty settles near the 17,500 level. The rupee appreciates to 82 rupees and 74 paise against the US dollar, and Brent crude remains steady to trade around $81.34 per barrel. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में हुई मामूली गिरावट। सेंसेक्स 59,600 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी 17,500 के स्तर के नजदीक आया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ मजबूत, ₹82.74 के स्तर पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81.34 प्रति बैरल के आसपास आई। घरेलू शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन आज भी गिरावट हुई। हालांकि शुरुआती कारोबार में थोड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन यह तेजी बरकरार नहीं रही और आखिरकार मामूली घाटे के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 139 अंक यानी 0.23% नुकसान के साथ 59,606 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 43 अंक यानी 0.25% घाटे के साथ 17,511 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों में मिला जुला रुख दिखा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% घाटे में रहा, जबकि निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty witnessed marginal losses today. Index of top 30 companies at Bombay Stock Exchange, Sensex, ended near the 59,600 mark. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed near the 17,500 level. Both the stocks fell amid mixed global cues. The Sensex lost 139 points or 0.23% to finish at 59,606. The Nifty 50 also fell 43 points or 0.25% to settle at 17,511. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.4% and the small-cap index rose 0.1%. In the Sensex pack, 13 companies posted gains while 17 witnessed losses. Axis Bank was the top gainer as it rose 1.4%, followed by ITC, which gained 1%. Tata Motors and State Bank of India both added 0.9% each. On the other hand, Asian Paints slipped to 3.2% and L&T declined 1.4%. IndusInd Bank and Bharati Airtel both closed 1.3% down. In sectoral indices at BSE, 14 sectors logged losses, while 6 sectors logged gains. Services and metal sector both gained 0.7% each. FMCG added 0.25% and BankX ended 0.2% up. On the other side, realty declined 1.6% while utilities sector tumbled 1.3%. Power sector fell 1.2% and consumer durables ended 0.95% down.
The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,580 gained while 1,862 fell. Shares of 157 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 11 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 74 पैसे पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.02% की बढ़त के साथ 104.6 पर चल रहा था। तो बाजार में लगातार पिछले कुछ सत्रों में हम गिरावट देख रहे हैं। आज भी मामूली घाटे के साथ बंद हुए हैं प्रमुख सूचकांक। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, करीबन 3 हफ्ते हो गए बजट का जो भी पॉलिसीगत नीतिगत रूप से जो भी घोषणा होना था, और साथ में मैं मानता हूं कि इस वक्त मार्केट सेटल डाउन कर रहे हैं। आने वाला जो क्वार्टर है, तिमाही है, एक तो नतीजे अगले महीने से शुरू हो जाएंगे आना, उसके बाद समर का जो दौर है और साथ में मानसून का जो प्रभाव रहेगा, वो लंबी दौर के दौरान मार्केट में जिस तरह का दौर इस वक्त चलेगा, तो मैं मानता हूं कोई भी निवेशक अब अगले 4 से 5 महीने का अवधि लेके चल रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म फोकस था, जो हम जनवरी में देखे थे, जहां पे मार्केट में काफी वोलेटिलिटी था, वो कहीं न कहीं जाके खत्म हो गया। साथ में ये भी हमें समझना जरूरी है कि विदेशी बाजारों में जिस तरह का रुख सब अपनाया हुआ है मार्केट में, उसका दौरान भी प्रभाव रहेगा जहां पे आज हम देखे। तो मोटी तौर से मैं मानता हूं कि दिस इज अ टाइम टू सेटल डाउन, और इस दौरान इस वक्त सेक्टरली आप लोगों को इस वक्त नीतिगत रूप से जिस तरह का घोषणा आया है, जो सेक्टर आपको पसंद है, वो थोड़ा बहुत मिड टर्म एक डिसीजन लेने के लिए सही समय है। अच्छी बात यह है कि मार्केट अभी भी 59-60,000 या 61,000 का आसपास अभी भी है, और उस तरह से मार्केट में कोई डीप करेक्शन जिस तरह का उम्मीद किया जा रहा था शुरू में शायद एक हो सके, उस तरह का स्थिति नहीं बने हुए। इसके अलावा मार्केट में हम सबको पता है एक निजी कंपनी का एक कुछ रिपोर्ट आने का वजह से एक अलग से स्टॉक मार्केट में हलचल मचा हुआ था। तो मैं मानता हूं उसका भी जो स्थिति है, जो मार्केट के ऊपर जब प्रभाव था, वो खत्म हो गया। हालांकि कंपनी विशेष में प्रभाव अभी भी है, शायद वो आगे बताएंगे किस तरह का स्थिति बने हुए, लेकिन एक ओवरऑल जो एक नेगेटिव मार्केट में जो फोकस था कि शायद वो बाकी स्टॉक मार्केट में एक अलग से आधी तूफान के जैसा ले आने के बाद मार्केट में एक मोटी गिरावट या भारी गिरावट हो सकता है, तो उस तरह का स्थिति नहीं है। तो ऐसे स्थिति में सेक्टरली जो परफॉर्म करने वाला जो स्टॉक्स है, मैं मानता हूं, और सेक्टर का रूप से अब जैसे बैंकिंग हो गया, एग्रीकल्चर का सेक्टर स्टॉक्स हो गया, फार्मा स्टॉक्स हो गया, धातु क्षेत्र में कुछ कुछ स्टॉक्स निवेश हो गया, तो इस तरह का स्टॉक्स को ऊपर ध्यान देते हुए सेक्टरली आप अपना पसंद करें टूल। और जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मोटी तौर से एक मीडियम टर्म का एक व्यू रखते हुए, क्योंकि मेजर कोई पॉलिसी इंप्लीकेशन अभी आने वाला नहीं है इस वक्त, और इसको ऊपर ध्यान रखते हुए आप अगर निर्णय ले, बेशक ये भी साथ में जरूरी है कि मुद्रास्फीति का जो खतरा है वो खत्म नहीं हुए है, और फेडेक्स ने भी बार बार अलग से चेतावनी भी दिए हुए। लोग सोचते थे कि शायद फेडेक्स का भी चेतावनियां ये आएंगे कि द वर्स्ट इज ओवर, वैसे चेतावनी नहीं आए हुए। यूएस में लेबर मार्केट का बहुत तगड़ा डिमांड का वजह से फेडेक्स ने भी एक व्यू पॉइंट दिया है कि भाई ये जो मुद्रास्फीति का जो अलग से जो चुनौती था वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ। तो शायद छोटा मोटा कुछ सरप्राइज आए, लेकिन इतना कुछ मेजर हम उम्मीद नहीं रख रहे अगले 2-3-4 महीने में हो, जिस वजह से शायद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका बदल जाए। तो एक अच्छा समय है जहां पे आप इसके ऊपर ध्यान रखते हो कि मार्केट में इस वक्त अगर स्टेबल लेवल 59 to 60,000 माना जाए, आप अपना निवेश कौन कौन क्षेत्र में करना चाहते हैं उसको सही रूप से आप अपना कंपनी परफॉर्मेंसेस भी आ रहा है वो देखें और निर्णय ले सकते हैं। So Jinto, the lending rates in our economy are edging higher. So, and that is going to have a lot of pressure on the margin profitability. Absolutely. And do you think this is going to have an impact on the cost of capital of the corporate India? Well, this is Rajesh, plain and simple math. If the lending rates are increasing, obviously there is no way you can, move out from the impact, or in fact even facing the impact. But the important point to understand here is at this point of time, we or even the markets have assumed these rates. It's not something as a surprise. The question of stretching out will come in when the peak interest rates, which we expect at, I mean, we are almost at the peak now, and there is a high chance in the next 3 quarters, either it remains stable or tapers down from here.
The squeeze will come in terms of market speculation is when the peak is still not defined somewhere, or still people will be far away. So markets will face much more stronger, should I say, much more stronger challenges at that point of time. So we are not thankfully in a situation at this point of time, number one. Number two, speaking of high interest rates, obviously it's a cause of concern for industry, because at this point of time, industry is on a demand growth path, and any sort of rise in costs would have an impact in terms of profitability analysis, in terms of new investment analysis and all. Let's not forget, China is opening up real fast ever since the January COVID threat which they had. And keeping a viewpoint from that part, what's also important to understand is globally to what level the production will go forth from here on. Will it go at a much more faster rate in terms of demand, because demand still exists, and the demand flow is also quite high, as a result of which inflation is just not coming down at the faster pace which we were expecting it to come down. So taking a cue from there, as I said, the real pain or the real threat will start happening when the peak period stretches, say, from 1 quarter, 2 quarters to say 3.5 quarters, and people feel there is no end in sight. It's all a matter of how you perceive. So if that stretches, obviously the profitability margins, while the math path will take care of, yes, they will dip, but the speculative part of how good or how healthy I am in the next, say, 6 quarters or 4 quarters in terms of planning my business and investments, that's where corporates are going to have a serious, rethink and re-strategy. As of now, I believe at the present rates which we are in, all company boards have that already incorporated into their next 6 months, 9 months of strategy. Okay, today the consumer durables ended 0.95% down. You were talking about the demand. How do you think demand is going to pan out in India? Because the fact of the matter is, people are postponing their buying decisions, or even trading across categories. Is that a good? Let me complete. That is not a very good sign. Do you see this as a remaining factor in the system? See, in terms of demand growth, I believe that the natural demand growth will be there. The supernatural demand growth, where people, if you're intended to spend, and in a very layman's term, if you're intended to spend, say, 10,000 rupees on a product, you go out and spend 16,000. So that's where, where people tend to do that when they have excess money coming into their pockets. We are in a scenario, and in fact, right before the budget, we had a detailed discussion in Market Mantra itself, where I have constantly said that the scenario of people losing jobs in the IT sector, has come in as a huge wave. And this is a very disturbing wave, because typically 3 or 4 sectors, IT, the airline industry, the travel industry, in a broader sense, airline also is part of the travel industry. When there are huge job cuts happening in these sectors, they are very early triggers of what's coming in the future in terms of general slowdown. The basic question we then tend to ask is, if, for example, in India, 40,000 people have lost their jobs in the IT sector, obviously that's going to trickle down to some effect in demand falling. So there is no denying that fact. But taking a cue from there, if this further goes down, slides down, then obviously there will be a demand slump. Now, if demand slump happens, there will be a correction in inflation rate. So it's all linked in that sense. What we have to figure out is, within this, how corporates are able to manage. But, for example, in India there is also a contrarian story. If you just look at, per se, the automobile sector, which traditionally always has been an important factor of how an economy grows in terms of number of sales of cars which you're doing, passenger cars, for example. Now, the waiting periods of passenger cars. In India, they are running into years. And some of the vehicles, they have 14, 16 months of waiting period, and people are still going and booking a car and waiting for that period and things like that. So that's one indicator. The other indicator is people losing jobs. So booking a car is not necessarily buying a car. So while there is a huge pile-up of demand on paper, because someone like you and me have booked a car at 50,000, which costs 20 lakh on the market, and there is a parallel rise of rate of interest. So when I go to the market 9 months later, when my actual delivery time of the car is ready, I can have a scenario where I don't have a job and I let go of that particular booking rate.
I can have a scenario where interest rates have shot up so much. I believe it's not worth buying this car and let me just cancel. So all these things are triggered and linked together. So we may have a situation in November or December where I see all of a sudden the whole auto sector growth which we're talking of. We face a scenario right before Diwali period where people feel that this is not the right time to pick up an expensive car. Even when I have waited for 7 months that I go and just cancel my booking. And then all of a sudden you can see a changeover in how the auto sector, would be behaving. So there are issues. Traditionally, because of the huge spending which the infrastructure has been doing last 3-4 years, and one of the largest spendings announced in capital expenses in this particular budget. So obviously this is going to carry forward more. So traditional sectors like cement and all will face a huge growth. I mean, there's a huge demand already there from the government itself. So they are going to have a really good day in terms of the next 2-3 years and all. Now, how much of a positive trigger they further throw out into the other sectors of the economy is once again something to see very closely. But then coming back to our initial views, they are so interlinked. I mean, they're so interlinked. We never knew that, because a particular semiconductor chip, in a particular country, Bolivia, I guess, whatever the country is, will not be producing or will stop selling it in the international markets and tell Taiwan, the second country, that there will be a global meltdown in auto sector. So these things we just couldn't imagine or fathom 3 years ago. I mean, imagine you having billions of dollars invested in a whole vehicle and there's a small chip which halts all your production in one go. I mean, there are thousands of cars piled up in your stockyards and they are unable to be sold off in the markets. So these sorts of surprises, Rajesh, over the last 5 years, we have seen globally, and we have seen how they are affecting local markets. I mean, as markets as deep as, even India also. So, as I said, this year will be a tough year. With high inflation, with people losing jobs, I just hope there's a state where the inflation starts getting controlled and falling down from here, because you have a stagflation sort of a scenario where, high job losses on one side with high inflation on the other side, and this is something worse which you can even think of in Nepal. But then also we have to see how the Fed reacts to managing, because they are once again, if they sneeze, the whole world, catches a cold sort of a scenario. Now most central banks work in tandem with what the Fed directs and leads. So all the factors put together. But let me also put you one small silver thing in the horizon. Amidst all this, say for example, we have a scenario in March where the Russian government announces no more fight with the Ukraine. And this might not affect India, but globally it will have a huge positive impact. So we can have these sorts of positive triggers also. So that's what we, in a nutshell, I mean. बहुत संक्षेप में जन तो समझना चाहेंगे हम, हमारे जो आम निवेशक है उनके लिए परस्पर दो विरोधी प्रवृत्तियों का आपने बहुत रोचक तरीके से उदाहरण रखते हुए बताया। ऐसे में जो छोटे निवेशक हैं उन्हें किन कह लें कि चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि चाहे मंदी हो या कह लें कि उछाल का दौर हमें देखने को मिले, उनका निवेश कुल मिलाकर लाभ में रहे, उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। उसके लिए क्या देखिए, इसमें तो सीधे राय ये है कि खुदरा निवेशक को, जिसको हम रिटेल सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उन लोगों का एपेटाइट का दौरान एक आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है, ये सही समय है अपना पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। इस पोर्टफोलियो के दौरान आप, जैसे मैंने कहा, एफडी का रेट्स बहुत अच्छा है इस वक्त, 8 से लेकर 9% भी दे रहे। कुछ बैंक जो है, स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, वो 9%, 9.25% दे रहे। तो कुछ वहां पे रिस्ट्रक्चर करिए फिक्स डिपॉजिट्स में, कुछ इक्विटी में इस वक्त प्रवेश करिए, अभी अच्छा समय है। कुछ खास करके ट्रेडिशनल से, जैसा सीमेंट वगैरह मैंने कहा, जो सेक्टर्स है उसको पर पढ़े। ये नहीं कि कोई भी कंपनी आप उठाए कहीं पे भी प्रवेश कर ले, ऐसा नहीं होता स्थिति। आप उसको पर पढ़ाई करें, सही इंफॉर्मेशन गैदर करें, दोस्तों से बात करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद पढ़े उसके बारे में, पढ़ के बेशक निवेश करें। तीसरा, धातु क्षेत्र, चांदी हो गया, सोना हो गया, हम लोग को ट्रेडिशनली हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त सोने का दर करीबन 55,000 के करीब 24 कैरेट सोना है, तो मेरे ख्याल से 52,000 या 50,000 के करीब 22 कैरेट सोने के दर होंगे। उसमें बेशक आप थोड़ा सा उसमें भी निवेश करें। तो यानी कि मतलब ये है कि आपने एक जो बात कहा कि भाई ज्यादा मुनाफा भी न हो, ज्यादा घाटा भी नहीं हो, ऐसा कोई स्थिति है। बहुत ज्यादा मुनाफा तब होगा आप बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे। जी। ये ट्रेडिशनली सालों भर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से माना जाता है, चाहे कहीं पे भी बात हो। तो ऐसे स्थिति में सही निर्णय वही होंगे जहां पे आप अपना रिस्क एपेटाइट जो है उसको जज करें, और आपका जो
लिक्विड डिमांड है पैसा का, आने वाले 3 साल में कहाँ क्या आपका खर्चा होना है, उसको ऊपर ध्यान देते हुए अगर आप अपना एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिक्रिएट करें इस वक्त, मैं मानता हूं ये समय बहुत सही है। और बेशक जैसे मैंने कहा, शायद 2 साल पहले कोई हम एफडी का डिस्कशन भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कोई बात भी नहीं कर रहा था 5.5-6% ब्याज दर में जाकर कोई एफडी रखना नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त 4.5 मेरे ख्याल से 4.5% भी दे रहा था कोई बैंक। तो ऐसा स्थिति में जहां पे 8.5-9% मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड रेट मैं मानता हूं। और ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है आपको, 12 से लेकर 14-16 महीने के लिए ज्यादातर। तो दिस इज अ वेरी गुड, जैसे मैंने बोला कि रिवर्क करके आप अपना बेशक कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में इस वक्त हमेशा कहा जाता है 12 से 14% अगर किसी को इक्विटी में ओवर लॉन्ग टर्म मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देयर बी हंड्रेड्स ऑफ केसेस जहां पे लोग बोले हमने 3 गुना कर लिया पैसा 2 महीने में, अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप 3 गुना नहीं कर सकते हर एक जगह में पैसा लगा के। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको 8, 8.5-9% मिल रहा है एफडी में भी, इट्स अ नाइस वे टू रिस्ट्रक्चर एंड रीबैलेंस योर फंड्स। आइए आगे बढ़ें, चलें वैश्विक बाजार की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% घाटे में रहा। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.4% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.1% नुकसान के साथ बंद हुआ। उधर निवेशकों की लिवाली से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% लाभ में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी मिला जुला रुख था। लंदन का FTSE 100 अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.4% नीचे चल रहा था। फ्रांस की CAC 40 में 0.2% की बढ़त थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.3% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। The S&P 500 extended its losing streak to 4 sessions as Wall Street ended broadly lower yesterday, with investors being cautious despite the latest guidance on rate policy from the U.S. Central Bank showing a few surprises. The Dow Jones Industrial Average fell 0.3% and the S&P 500 declined 0.2%, while the Nasdaq Composite Index rose 0.13%. Gents, the latest commentary coming out of the FOMC minutes is that markets seems to be readying for higher rates and for slightly longer periods. What's your take on this? That's exactly what we were, saying in a short while ago, Rajesh, where I said, if they believe that the peak gets extended a bit more, then the corrections and the challenges become much more deeper. So at this point of time, as I said, with the fluctuating labor market figures coming in, and with the demand status in the US markets, obviously now FOMC believes that they might have to stretch the peak periods a bit more than what was initially augured for. Most of the market were at this point of time looking forward to a stable next 3 to 4 months in terms of 25 basis points increase or 50 basis points increase. But it's not to be so. I do believe there is a bit more of pain left in there. The interesting part will come in if the FOMC in the next meeting goes and announces a 65-70 basis point increase all on a sudden. So that would obviously shock the markets to some extent. Moving on, Prime Minister Narendra Modi has said that this year's budget provides several opportunities for investors and people of this country to protect their future by moving towards green growth. He said the government is taking steps to provide every possible assistance to ensure green growth of the economy. While addressing the first post-budget webinar on green growth today through video conferencing, Mr. Modi said, every budget presented by this government since 2014 has been taking forward new age reforms to solve the present challenges. He said this budget will play an instrumental role in establishing the country as a lead player in the global green energy market. He added that this will help in increasing the green jobs and ensure global good. Highlighting the initiatives taken by the government to ensure green growth and energy transition, Mr. Modi said, increasing the production of renewable energy, decreasing the use of fossil fuels, and moving towards a gas-based economy are the 3 pillars of the country's priorities and strategies. He said several important announcements, including PM Kusum, rooftop solar scheme, incentives for solar panel manufacturing and battery storage were made in the budgets since 2014. यहाँ पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी समझना चाहेंगे। जो जिस हरित ऊर्जा की, हरित विकास की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वह क्या है और किस रूप में यह
अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने में सहायक होगा, विश्व परिदृश्य में भी? देखिए मनोज, मैं मानता हूं कि दुनिया में करीबन अगले 10 साल का बात करें, 2025 से लेकर 2035 या इवन 2030 ऑनवर्ड्स, ग्रीन एनर्जी और खास करके ग्रीन कंपनीज, जिसको अभी नया एक दौर मिला है, वो सारे एक सस्टेनेबल और साथ में एक फॉर्मिडेबल फोकस एरिया रहेगा। कोई भी सरकार का कहीं पे भी दुनिया में उठा ले, उसका मेन वजह दो है। एक तो वजह यह है कि ट्रेडिशनल एनर्जी सेक्टर, सबको पता है, 2027-2030 से ऑलमोस्ट ना मिलना बंद हो जाएंगे, ये पहले भी कहा जा रहा था। दूसरा, जो ग्लोबली सबका कमिटमेंट है, अर्थ क्लाइमेट समिट में या अलग अलग समिट में जाके सारे देश मिलकर जो साइन किए हैं, उस कमिटमेंट के दौरान भी अगर आप देखें तो ऑल नेशंस आर कमिटेड टू इट, और इसमें भारत को बहुत जरूरी है और सही दिशा से, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा, हर बजट में एक नया जाके लेवल हम जाके हासिल करने का कोशिश किए हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं इसको। तो भारत का जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशंस है, तो यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ एक मेजर ड्राइवर होगा, नहीं तो ग्रीन अर्थ का जो बात कर रहे हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जी। और आज जैसे हम कोई भी विदेशी में डिप्लोमेटिक चर्चा कहीं पे भी होता है जहां पे दुनिया का शांति, इकोनॉमिक स्ट्रेट के बारे में बात हो रहा है, अगले 2-3-4 साल बाद उतना ही डोमिनेंस ग्रीन सेक्टर का हो जाएगा। कहीं पे भी बात होंगे तो लोग हर चीज सोचेंगे कि सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी के साथ कितना इसका अलाइंड है ये सारी नीति। तो ऐसे रूप में एक इंडिया का फर्स्ट स्टार्ट या क्विक स्टार्ट का अगर आप आने वाले 3-4 साल में बात करें, तो मैं मानता हूं ये नीतिगत रूप से ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना, सरकार को जो अलग अलग सुविधाएं दिया जा रहा है, जो ग्रीन सेक्टर में निवेश करना चाहता है या जो प्लेयर्स इस वक्त है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल। Moving on, the oil prices stabilized today after Brent crude posted its biggest one-day loss for 7 weeks in the previous session, with gains on Russian supply curbs capped by an expected rise in U.S. inventories. In intraday trade, Brent crude was trading at $81.34 per barrel, while WTI crude prices were at $74.62 per barrel. Jento, our usual question about where is the oil heading? Well, your perspective. Yeah, so typically I believe that oil might go in for further price shocks in terms of falling down. You're talking a lot of shocks today. The reason being, as I said, if the rate increase is there to stay at this point of time, there would be some demand pressure. And the winter is over almost in most of Europe, so the major demand for oil or energy in that sense would also have an impact. Unless there is some supply side new bottlenecks created, I don't see oil going much from here on. So the chances of it going down further is much more prevalent than going up from here in a very short notice. And what about the inventories, the U.S. inventories? They are really increasing the inventories. Yeah, so that's why I said the chances of it going down would be much more prevalent at this point of time, unless there is some supply side, hiccups. As I said, the oil cartel always behaves in the craziest of manner. Okay. So taking a cue from there, and if you look at the last 10 years, they are there to throw up any sort of challenges at any point of time. So, as I said, the next 3 months I don't see a major uprise in oil prices at least. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 352 रुपए घटकर 55,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 405 रुपए कमी के साथ 65,033 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से जयंतो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शुक्रिया मनोज। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस जयंतो। And before we close, the headlines once again. Domestic stocks witnessed modest losses amid mixed global cues. Sensex closes near the 59,600 mark. Nifty settles near the 17,500 level. The rupee appreciates to 82 rupees and 74 paise against the US dollar, and Brent crude remains steady to trade around $81.34 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.